Good morning, students. In this video, we will do another example, numerical, based on electric field intensity. Okay, so let's start. Pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 raised to the power minus 8 coulomb is at rest. एक पेंडुलम है and its mass is given, its charge is given, and it is at rest. The important thing is pendulum is at rest, okay, and it is in a uniform electric field and it is directed horizontally. So the direction of the electric field is horizontal, okay, and its value is given 2 into 10 raised to the power 4 volt per meter. It is the magnitude of electric field. Okay, find the tension in the thread of the pendulum. We have to find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. Okay, so first we have to think the situation what is given to us. So in this question a pendulum is given to us and which is at a rest, and the important thing is it is kept in a uniform electric field directed horizontally. We have to find tension in the thread. So tension is basically a force present in string, rope, thread, in this kinds of thing. Okay, so first of all we will make its diagram. Okay, so this is the solution given to written here, but I'll explain to you how it came. Okay, so student, this is our diagram. Okay, so in this diagram you can see, if you will, this is our pendulum. Okay, this is our pendulum, and this pendulum mg is acting downward and QE is the electric force. Okay, it is directed horizontally. Okay, so basically it is at rest. The important thing is here, this pendulum is at rest, it is not moving. Okay, so when it is at rest, it means all the forces acting on it cancelling the effect of each other. Okay, so take care of this thing. Do not directly equate QE with mg here, because in this question they are not in opposite direction. Okay, so in this question first you have to do resolve or component of tension. Okay, so this is the tension. Okay, this is the tension in the thread. Okay, this is the tension. Okay, and this is theta, and this theta यहाँ पे भी अगर आप बनाओगे तो ये एंगल भी आपका थीटा आ जाएगा. ओके, सिमिलरली इस फिगर में अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो दिस विल आल्सो कम थीटा. ओके, ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा. ओके, नाउ सी, इफ दिस इज थीटा, नाउ सी this is tension in the string. So what will be this component if this is theta? अगर आपके पास ये एक है और ऐसे में एक ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो ये t है. ओके, तो आप अगर इसे देखो तो ये बेस होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा t cos थीटा इन दिस ट्रायंगल, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे तो ये होगा 9. इसको अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा. ओके, और अगर आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओ तो आपका आएगा t cos 90 माइनस थीटा, विच मीन t sin थीटा. So this component is, so this is in this way. Okay, in this way you can see this is a tension T here and it is here, so this angle is theta and it is making with also this angle theta. Okay, so this is 3 cos theta and this is 3 sin theta. Okay, so opposite to it, downward gravity,
is acting, and this is t cos theta t sin theta, it is QE. Okay, so now see, if this pendulum is at rest, okay, our pendulum, this is our pendulum, it is at rest. Okay, our pendulum is at rest. Okay, it means that all the forces acting on it is cancelling the effect of one another. You आपको वो फोर्स लेना है जो जस्ट अपोजिट हो एक दूसरे के. So if this is going in forward direction, this is acting in backward direction. So what will we will write? We will write that T sin theta equals to QE. This is our first equation. Okay. Another is, you can take this one. Okay. Just opposite is this one. Okay. And this angle is theta. So you can write T cos theta equals to mg. This is our second equation. Okay. So from the diagram we have two equations. Take care one thing, that always understand this diagram, and this diagram is called FBD, which means free body diagram. Free body diagram. F stands for free, B for body, D for diagram. Free body diagram. In the free body diagram, we basically indicate all the forces acting on that object. The possible forces we know. Okay. Now moving further. Okay. So first equation is what we have taken first is T sin theta. Okay. So it's T sin theta equals to QE, and another one is T cos theta equals to mg. Students, we will divide it because we want to find out theta also. Okay. So when you will divide it, you will get sin theta upon cos theta tan theta QE by mg. Okay. Student, in the question we have provided all the values. Okay. So let's see the value what are given to us. Mass is given 80 milligram, charge is given 2 into 10 raised to the power minus 8, 2 into 10 raised to the power. स्टूडेंट, आप इन सब वैल्यूज को पुट करोगे क्वेश्चन में. Q गिवन है, E गिवन है, mg गिवन है. tan थीटा आपका सॉल्व करोगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी कुछ, और वो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जो कि आपको पता नहीं है. लाइक जैसे आपको क्या पता है, आपको तो √3 पता है, 1/√3 पता है, 1 पता है, 0 पता है, इन्फिनिटी पता है. यही है ना 10. अगर आप 10 की वैल्यू देखो तो 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी. 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 45 1 होता है, 60 √3 होता है, 90 पे इन्फिनिटी. लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ना tan थीटा की, इनमें से कुछ नहीं आएगी. तो इसमें परेशान ना हो, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना. जब आप इतना आप खुद सॉल्व करोगे, इसके बाद आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना. क्या वैल्यू पुट करोगे? tan इनवर्स दिस वन. जब आपको थीटा निकालना होता है तो आप इसे इधर लेके आओगे, तो tan इनवर्स निकालो क्या. ओके. तो ऐसे आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी. आपको एग्जाम में गिवन ही होगी वो वैल्यू. ठीक है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बट आप इतनी कैलकुलेशन खुद करोगे. ठीक है. इसके बाद हमें क्या निकालना था? टेंशन. ओके. अब देखो, किसी भी अगर आपको अगर आप जो tan थीटा निकालोगे, ठीक है, तो जो tan थीटा आपका आ रहा है उससे आप sin थीटा निकाल लो. tan थीटा निकाल sin थीटा तो निकाल ही सकते हैं ना अगर आपको tan पता है. फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो, QE के लिए सॉल्व कर दो, आपका T आ जाएगा. ओके. तो इसका मैंने आपको वे बता दिया है. अब आप ट्राई करोगे इसे खुद से, और जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा T की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग 8.81 into 10⁻⁻⁴ मीटर. ओके. थैंक यू.